Hello guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji। मतलब गैजेट्स की दुनिया जो इतनी ज़्यादा मैजिकल है उसका मैजिक अच्छे तरीके से हम एक्सपीरियंस कर पाए। दैट्स द रीज़न आई कम टू यू एवरी वीक, ताकि थोड़ा सा नज़दीक जाके अच्छे से एक्सप्लोर कर ले इंटरेस्टिंग गैजेट्स को, और साथ में we share some knowledge, maybe some trivia, at the same time some tips and answers to your questions as well. So guys, in this episode I have got all the same ingredients packed nicely, cooked nicely just for you. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Hello friends, my name is Gaurav aka Technical Guruji. You're watching Gadgets 360 with Technical Guruji। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग एज ऑब्वियस जो हम हर बार करते हैं इज टू जस्ट टेक अ क्विक रीकैप, ताकि हमको पता चले कि आखिर पूरे हफ्ते में क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेक्शन न्यूज ऑफ द वीक। It's time for football fans to rejoice क्योंकि the Redmi Note 13 Pro Plus 5G World Champions Edition इंडिया में आ चुका है with a bang. This special phone is made in partnership with the Argentina Football Association. It looks absolutely awesome with blue and white stripes and of course Messi ka iconic number 10. You'll feel like a champ with its super fast processor and lightning quick 120-watt charging. The box is full of surprises with the AFA logo, a football shaped SIM ejector and super cool wallpapers. Grab this phone and celebrate Argentina's World Cup victory. Apple welcomes two new additions to its Beats by Dr. Dre's wireless audio family, the Beats Solo Buds and the Beats Solo 4. ये दोनों क्रॉस compatible है with both Apple and Android devices और ऑफर करते हैं the convenience of USB Type-C charging for a streamlined experience. The Beats Solo Buds promise effortless one-touch pairing for instant connection और boast करते हैं of an impressive 18 hours of total playback time, जो ideal रहेगा for extended listening sessions. The Beats Solo 4 headphones, an upgrade over the popular Beats Solo 3, feature करते हैं एक refined design और cutting-edge audio technology. They offer personalized spatial audio with dynamic head tracking for an immersive sound experience. वो भी 50 hours of battery life के साथ to keep the music flowing. After long anticipation, PlayStation 5 owners can finally set sail on the high seas. Rare ka beloved pirate adventure game Sea of Thieves has officially launched for the PS5. This vibrant multiplayer experience lets players embrace the pirate life, embarking on treasure hunts, battling fearsome sea creatures and engaging in thrilling ship-to-ship combat. PS5 players अपने Xbox और PC counterparts के साथ भी खेल सकते हैं for cross-platform adventures. The PS5 version promise करता है to take advantage of the console's capabilities, possibly offering enhanced visuals and faster load times. चाहे आप एक seasoned Sea of Thieves veteran हो या फिर a newcomer ready to hoist the Jolly Roger, the world of Sea of Thieves awaits on PlayStation 5. So friends, the first gadget that we have for this week's episode is this. The all new Xiaomi 14 Ultra. I mean, ये जो phone है, this is a flagship device from Xiaomi. Packs a lot. मतलब, if you talk about the in-hand feel, the device is really premium. The camera is made in collaboration with Leica. I mean, जो lenses हैं वो Leica ने बना के दिए, and the entire hardware is really fantastic. The phone feels like a flagship phone. काफी interesting features हैं, things like the latest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor. We have a nice Quad HD Plus display, 5000 mAh battery, and I mean everything packed in this nice looking package. Let's have a closer look कि आखिर क्या features हैं all together इस Xiaomi 14 Ultra में, and then I'm gonna tell you what do I think. मतलब इस फोन के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, so that you can make an informed decision of buying or not buying this phone. Forget ordinary. The Xiaomi 14 Ultra has arrived to redefine smartphone power. Its massive 6.73-inch display doesn't just boast eye-popping resolution, ये blaze through करता है with a 120Hz refresh rate, making every swipe and scroll buttery smooth. And for those clumsy moments, rest assured the display's toughened protection can handle the occasional bump or drop. Under the hood, the Ultra पैक करता है 16GB of RAM, जो कई लैपटॉप्स के मुकाबले ज्यादा है, और जब इसको बूस्ट की जरूरत हो, इसका 90 वाट फास्ट चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग have your back, ready to get you back in the game in record time.
कैमरास की बात करें तो prepare to be amazed. The Xiaomi 14 Ultra wields a quad camera setup that's like having a professional photography studio in your pocket. 450 megapixel cameras, each with unique strengths, deliver stunning shots in any lighting condition, from vibrant landscapes to dramatic portraits. और selfie lovers के लिए the 32 megapixel front camera ensures you look your best every time. Durable, you may ask. You bet. With an IP68 dust and water resistance rating, this phone's ready for your next adventure. So friends, there you have it. आपने देख लिया है all together. Now you have the entire information about this Xiaomi's latest 14 Ultra on sale right now, retailing at rupees 99,999 rupees. और जो variant है ये है 16GB RAM और 512GB storage के साथ में. Now I'm going to give you my honest take about this phone. So guys, the fact is कि फोन का जो हार्डवेयर है वो बहुत अच्छा है without a doubt. I mean, it is a flagship phone. There are two concerns. Number one is the software. I mean, Xiaomi calls कि इसमें हमको नया HyperOS मिल रहा है and blah blah blah. But in reality, this exactly feels like a typical MIUI. And the fact is that the animations or the way the icons are or the way you get, all the features in terms of software, phone does not kind of provide you a great premium feel. यहाँ पे phone feels like a cheap phone. जो आपको एक 15,000 के phone में experience मिलता है, kind of a similar experience in this 1 lakh rupees phone. That's point number one. Point number two is this thing right here. I mean, the brand image of Xiaomi, especially in India, is pretty low in the market. I mean, आपको पता है, we have phones from Samsung, we have phones from Apple, we have phones from OnePlus and Google. I mean, these are the brands जहाँ पे people are paying that price to get their phones. OnePlus again इतने time बाद has reached the mark of around 60,000-70,000 rupees. Beyond that, अगर हम बात करते हैं, Samsung and Apple clearly dominate the market. Now, while we have options from Samsung and Apple, why would someone would want to get a phone from Xiaomi at that price? That's point number two. इन दो चीज़ों को अगर हम साइड करते हैं, the phone is really amazing, the cameras are really promising, the entire experience of the hardware is really solid. But what lacks is a good software and the positioning of Xiaomi in the Indian market. तो Xiaomi को लगता है थोड़ा सा और मेहनत करने का अभी requirement है और उसके बाद हम देखेंगे शायद in future people putting in their lakh rupees for this kind of a phone from Xiaomi. Well, friends, moving ahead, let me give you a very interesting piece of information. अब see, information हो या data, we store it in our storage drives. And usually we have multiple different options. I mean, external drives भी होती हैं, we got SSDs, memory cards and whatnot. Now, usually you might have a drive capacity of, let's say, 1 terabyte, 2 terabyte, 4 terabyte, etc. But आपको पता है what's the maximum possible capacity right now? I mean, what's the highest capacity hard drive available globally? The answer is it's from Seagate and the storage capacity is 30 terabytes. Is just imagine एक drive है, a single piece can hold data worth 30 terabytes. अब अगर आपको लग रहा है what about SSDs? So let me give you another shocker because it's from Nimbus and the Exa drive has a maximum capacity of 100 terabytes. Just imagine 100 TB की स्टोरेज हमारे पास में एक SSD में है. एक टाइम था जब मेमोरी कार्ड्स होते थे of 32 MB, 64 MB. Today we have memory cards going up to 1.5 terabytes. इतने से साइज में. And these kind of drives, वैसे अगर आपके पास में हो तो आप क्या स्टोर कर सकते हो? बेसिकली आई थिंक योर मतलब बचपन से लेके एंड तक जितना डेटा हम जनरेट करें, आई थिंक 100 टेराबाइट से ज़्यादा नहीं होने वाला है. सो वी कैन स्टोर एवरीथिंग इन वन प्लेस विद दीज काइंड ऑफ ड्राइव्स. डिड यू नो दिस? If yes, then amazing. If no, then please let me know by dropping in your emails to tg@ndtv.com. Guys, moving ahead, we have this, the latest watch from Lava. It's called the Pro Watch, and यहाँ पे it's for the first time कि Lava is entering into the smartwatch territory, and I think looks like a quite polished product with some amazing features baked in.
काफी एग्रेसिव प्राइसिंग भी है इसकी. सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट दिस लेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम लावा, द ऑल न्यू प्रो वॉच, एंड एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्मार्ट वॉच एक्सपीरियंस. Lava has dropped its latest, a wearable, the super cool ProWatch ZN. ये स्मार्टवॉच काफी स्ट्रॉन्ग है with a metallic build और इसका 1.43 inch AMOLED touchscreen is protected by Gorilla Glass 3. The Lava ProWatch is IP68 water resistant और health के लिए the ProWatch ZN is a champ. It tracks your heart rate, blood oxygen and even your stress levels. Plus ये आपके sleep and breathing patterns को भी monitor कर सकता है. Fitness enthusiasts को इसके 110 से भी ज्यादा sports modes बहुत पसंद आएंगे. But what about the battery, you ask? Lava claims this smartwatch champion can last up to 8 days on a single charge. बहुत impressive, we say. And if you're the type who loves talking on your watch, the Bluetooth calling feature is a total cherry on top. और इसका best part, the Lava ProWatch ZN starts at a super affordable rupees 2,599 only. फ्रेंड्स, हम वॉचेस की बात कर रहे हैं. वॉचेस टेल अस टाइम, एंड स्पीकिंग ऑफ टाइम, आई वुड से इट्स टाइम नाउ टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. और ब्रेक के बाद आप जब वापस आएंगे, आई एम गोना गिव यू एन इंटरेस्टिंग टेक टिप, और उसी के साथ आपके सवालों के जवाब भी देने वाला हूं. एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, welcome back after the break. My name is Gaurav. You are watching Gadgets 360 with Technical Guruji. और ब्रेक के बाद जब आ ही गए हैं, तो it's time now for me to give you a nice tech tip. अब देखो, होता क्या है ना, बहुत बार whenever you use Gmail and you're trying to compose a new email, friends, you all know कि that section जहाँ पे हम email को compose कर रहे होते हैं, वो बहुत छोटा सा होता है. कई बार it's not that convenient to draft long emails. You know what? You can use the power of Google Docs, and वहाँ पे you can create your complete long emails and easily you can send them in Gmail. So basically, if you are in Google Docs, just type @email and वहाँ पे you will see this entire thing coming up, जहाँ पे आप properly अपना email draft कर सकते हैं. You can add in the recipients, you can add in the subject line. आप email की body में जैसा चाहें वैसा पूरी एक proper formatting के साथ में अपना email draft कर सकते हैं. And वहीं से you can just hit a button to preview this email in Gmail and then just hit a button to send it. काफी easy and काफी convenient tip है for everyone who's using Gmail on a regular basis. Basically helping you compose longer emails in a better way within Google Docs. कैसा लगा ये टिप? मुझे जरूर बताना. फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हुए एक बार वापस से टाइम आ गया है टू मूव इनटू माय पर्सनल फेवरेट सेक्शन. इट इज ऑल अबाउट आस्क जीजी, जहां पे मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए. लेट्स सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव फॉर दिस वीक्स एपिसोड. वेल, आई मीन व्हाई नॉट. पावर बैंक से आप लैपटॉप्स को चार्ज कर सकते हो. द ओनली थिंग यू नीड टू केयर अबाउट इज द काइंड ऑफ आउटपुट योर पावर बैंक इज प्रोड्यूसिंग. अगर वो बहुत कम है, लेट्स से लिमिटेड टू 18 वॉट्स और 30 वॉट्स, 30 वॉट्स पे पॉसिबल हो जाएगा, बट 18 एंड बिलो इज नॉट रियली आइडियल टू चार्ज अ लैपटॉप. बट येस, देयर आर पावर बैंक्स प्रोवाइडिंग आउटपुट्स ऑफ लेट्स से 65 वॉट्स, 100 वॉट्स, 140 वॉट्स, एंड वहां से यू कैन इजीली चार्ज योर लैपटॉप, फॉर एग्जांपल अ मैकबुक, comfortably from the power bank. Hi TG, I tried installing a USB charger to my bike, but it didn't work. What do you think is the possible reason for it? Will I have to change my bike's battery? Multiple things could be there. I mean, हो सकता है the battery is not able to provide the kind of required power. Second could be a case in the wiring. तो I would recommend if you can go to a proper mechanic, और वहाँ पे अगर आप help लेके install करेंगे, rather than doing it yourself, you might definitely have a better place, and वहाँ पे आपका चार्जर जरूर लग भी जाएगा एंड काम भी कर लेगा. वर्स्ट केस हो सकता है आपको बैटरी चेंज करनी पड़े, बट देन अगेन इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव अ चार्जर इंस्टॉल्ड इन योर मोटरसाइकिल फॉर कम्यूट्स, जहाँ पे आपको आपका फोन माउंट करना है सामने, वेरियस अदर रीजंस. So yes, it is pretty simple, but at the same time might be some issue with the wiring or the battery. I want to get external lenses for my iPhone 15. Do you have any recommendations for the same? Why not? I mean, अगर हम बात करते हैं external lenses की, तो yes, there are multiple options in the market, but if you are serious about photography या videography, I would recommend
द लेंसेज फ्रॉम मोमेंट। आई मीन आपको बहुत सारे चीप लेंसेज मिल सकते हैं, यू नो, क्लेमिंग कि ये आपको बहुत अच्छा जूम दे देगा वगैरह वगैरह, बट if you are really particular about getting a good quality out of the iPhone, आपको use करने चाहिए the lenses from Moment. It's a brand giving you all the options from ultra wide to telephoto to anamorphic lenses, and people are shooting professional grade videos from these lenses mounted on the iPhones. So they have multiple lineup of different lenses. At the same time, जो cases हैं इनके, once you attach the case, you can easily swap the lenses from the phone. They are big, they are bulky, but they are really good. I want to buy an AC, but I have been told that inverter AC can be problematic. So what is the difference between normal and inverter ACs? Well, to be honest with you, आपको जो बताया गया है वो गलत बताया गया है. Inverter ACs are in fact way better than the traditional non-inverter ACs. Basically होता क्या है, in a non-inverter AC आपका कंप्रेसर चल रहा है, वो बंद हो जाएगा once you reach a certain temperature, फिर वो वेट करेगा और फिर दोबारा ऑन होगा. मतलब इट्स नॉट वेरिएबल. बट इन एन इन्वर्टर एसी द कंप्रेसर इज वेरिएबल. सो बेसिकली वो रैंडम जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा. नंबर वन, एसी बीइंग ऑन एंड ऑफ, वो अडेप्ट कर सकता है बेसिस ऑफ व्हाट्स द टेम्परेचर, एंड एट द सेम टाइम दे आर रियली एफिशिएंट एज वेल. तो अगर आप एक इन्वर्टर एसी यूज करते हैं, इट वुड बी एफिशिएंट, द लाइफ स्पैन वुड बी गुड. सो आपको दोनों फायदे मिलने वाले हैं. आई मीन अ नाइस completely temperature inside the room, depending on your preferences. At the same time, जो बिजली का बिल है वो भी comparatively कम आने वाला है, ज़्यादा शोर भी नहीं होगा और AC लंबा चलेगा if you opt for an inverter AC. Non-inverter ACs जो हैं थोड़े सस्ते मिल सकते हैं आपको in the initial level, but longer run में not that effective. So friends, that's all from this week's episode of your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. अगर आपका कुछ भी सवाल है अगले एपिसोड के लिए या कुछ और अगर आपको बातें लिखनी है, you know the address, it's pretty easy, tg@ndtv.com. I look forward to all your emails और मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में with some amazing information around gadgets एक बार वापस से. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही. See you all next week. Have a good day.